Hello everyone, this is Hima here, your best friend from Blackboard Learners. So all the portion from Hydrosphere, जो कि आपके geography portion से था, that I have explained clearly. Hope you would have understood. अगर नहीं समझ आया, you can ask me by sending your queries. And now we are going to start the question answers from the same chapter, Hydrosphere. So these some terms are there which we have to define. Okay, so first one is hydrosphere. Hydrosphere क्या है? Hydrosphere is the total amount of water on the planet Earth. जितना भी पानी surface Earth पर फैला हुआ है, अर्थ पर है, सरफेस पर हो या वो अंडरग्राउंड हो, इट इंक्लूड्स वाटर दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अंडरग्राउंड और इन द एयर. किसी भी फॉर्म में कहीं भी जो पृथ्वी पर वाटर है, दैट इज हाइड्रोस्फीयर. नेक्स्ट इज वाटर साइकिल. द वाटर साइकिल शोज the continuous movement of water on the earth and in the atmosphere. Water from all the water bodies like oceans, seas, lakes and ponds evaporates. ये मैंने अच्छे से explain किया है कि पानी evaporate हो जाता है into water vapors, और water vapors क्या करते हैं? Condenses to form clouds. ये condensed हो जाते हैं, फिर clouds को form करते हैं and precipitates, और वापस क्या करते हैं? Precipitate back to the अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो. पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, गिर जाते हैं रेन और स्नो के फॉर्म में. दिस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कीप्स ऑन हैपनिंग एंड इज नोन एज वाटर साइकिल. ओके, नेक्स्ट इज ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स क्या है? रिवर ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर्स. बहुत बड़ी बड़ी सी चट्टानें होती हैं जो कि कीप ऑन मूविंग, और उन्हीं को ही एक तरह से बहुत बड़े बड़े से आइस होते हैं जो कि जमे हुए फॉर्म में होंगे लाइक रिवर्स, और ये कीप ऑन मूविंग, इन्हीं को हम ग्लेशियर्स कहते हैं. इट इज फाउंड इन दी हाई ऑल्टीट्यूड एंड हाई लैटिट्यूड. हाई ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर ये ज्यादातर कॉमनली वी कैन सी. Salinity. Salinity means the amount of salt in grams percent in 1000 grams of water. Okay, 1000 grams पर कितना ग्राम होगा पानी? 1000 किलोग्राम वाटर पर, that will be measured. That is called salinity. या फिर salinity को हम इस तरह भी कह सकते हैं, salinity is the amount of salt dissolved in a water body. किसी भी एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी में कितना परसेंट वाटर डिसॉल्व है, इस अमाउंट को भी हम salinity कहते हैं. नेक्स्ट इज ओशन करंट. ओशन करंट क्या है? द रेगुलर और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द सरफेस वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ सी, और द ओशन इज कॉल्ड ओशन करंट. ओके, नेक्स्ट वन इज टाइड्स. Tide also we have to define. That is the regular and periodic rising and falling of the surface of the sea water is called tide. These are, very important for us. Next, these are the question answers. In the previous slides, we were defining some terms. Okay, now the question answers. First question is, what is the percentage of fresh water found in the surface of the earth as lakes, streams and rivers? So 3% of fresh water is found in the surface of the earth as lakes, streams and rivers. Total 3% water है जो कि lakes, streams या फिर rivers के फॉर्म में हमारी पृथ्वी पर है. That is also known fresh water. Okay. Next question is, why is the earth called the blue planet? Earth को हम blue planet क्यों कहते हैं? Okay. So the earth is called the blue planet as 71% of its surface is covered with water. और water जो है थोड़ा सा blue होता है, उसका color हम ऐसा मानते हैं कि water is in blue color in blue in color, तो इसलिए इसको हम कहते हैं blue planet, क्योंकि 71% water जो है, that is 71% area जो है that is covered with water. Next is, how are tides caused? किस तरह से tides बनते हैं? That we have to explain.
टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बनते हैं, बट किसका? एक्सरसाइज्ड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल पुल सन और मून का पृथ्वी पर होता है उससे ये बनते हैं, उससे टाइड्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन? इवेपोरेशन से क्या मतलब है आपका? तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर चेंजेस इनटू लिक्विड टू गैस और वेपर। इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वाटर जो है या वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है वो गैस फॉर्म में या वेपर्स में बदल जाता है। और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, due to the heat of the sun, the water which is in liquid form in any water body turns into gaseous form in water vapor and mixes with the air. This process is known as evaporation. Next question is, describe the different movement of the ocean water. So there are three main movements of the ocean water. They are waves, current and tides that already I have explained through the video. And the first we will describe the waves. That is when wind blows over a surface of the water. It comes in the friction with the water and by striking its surface, make it rise and fall in troughs and crates. These are known as waves. The next one is current. The regular or horizontal movements of the surface water from one place to the another in a sea or an ocean are called currents. Next one is tides. Tides, you know, the regular and periodic rising and falling of the surface of the sea water is called tides. Next question is, how are tides caused? Tides are caused by the gravitational pull exercised by the sun and the moon on the earth. And the next question is, what is tsunami? How it is caused? Tsunami is not a single wave, okay? It is a series of waves, means कि बहुत सारी waves एक साथ होती हैं. It is known as wave trains too. इसको हम wave train भी कह सकते हैं. It flows with a great speed like jet planes and very destructive. बहुत ज्यादा स्पीड से ये आती हैं जैसे कोई एरोप्लेन चल हो, और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है. The next question is, what does the word tsunami? Tsunami जो word है उसका meaning क्या है? This is the Japanese word and made up of two words. ये Japanese word है और two words से मिलकर बना हुआ है. Okay? TSU, यहाँ पर T silent है, so हम इसको पढ़ेंगे सू, पढ़ते ही हैं, जिसका meaning होता है हार्बर यानी कि बंदरगाह. एंड नामी वर्ड मीन्स लॉन्ग वेव्स, इसलिए सुनामी का मतलब होता है द सुनामी मीन्स लॉन्ग वेव्स स्ट्रिंकिंग दी हार्बर. हार्बर तक आकर बंदरगाह तक आती हुई टकराती हुई वेव्स जो है दैट इज कॉल्ड सुनामी. नेक्स्ट इज व्हाट आर स्प्रिंग टाइड्स? The sun and the moon exerts their combined gravitational pull in the same direction, resulting in extra high tides are called spring tides. Means sun और moon जब अपना combined pressure, combined gravitational pull use करते हैं, तब उसमें जो एक उसका जो result होगा that will be create high tides, और वो high tides जो है उनको ही हम spring tides कहते हैं. Okay. Next question is, what are the factors by which the direction of ocean currents are greatly affected? So there are two factors by which the direction of ocean current are greatly affected. यहाँ पर two important factors हैं जिनसे कि ये affect होता है ocean current, direction of ocean current. Okay. First one is shape of the adjoining continents. This already I have explained through the video that what does it mean or how does it happen. Okay, happens. So the second one is the rotation of the earth. And the next question, what are the factors on which the salinity depends? वो कौन-कौन से factors हैं जिन पर की salinity depend करती है. Okay, so these are two factors, the rate of evaporation and the amount of fresh water added by rivers and rainfall. Next question is, what do you mean by fresh water? Fresh water से आपका क्या मतलब है?
So water that contains very little dissolved salt is called fresh water. ऐसा पानी, ऐसा water जिसमें कि बहुत कम salt dissolve होगा, वो होता है fresh water. So these all were the question answers of the same chapter, Hydrosphere. Do complete, and whatever you think your queries are, send them in the comment, or you can comment over the videos, and description में check करते रहना all time, every time. And these are your choices. As always I say, these are your choices, but you have no choice. You have to like, share, subscribe, comment, press the bell icon, and thank you so very much for watching. Hema Sharma, your best friend from Blackboard Learners.